Maulana Arshad Madani has issued a controversial statement about the Bajrang Dal. Remember, the Jamiat Ulema-e-Hind president on Sunday had said that if the Congress had banned the Bajrang Dal 70 years ago, the country would not have been ruined. Remember, when it comes to the Bajrang Dal matter and the Congress, the Grand Old Party, before the elections took place, in its manifesto, had essentially said that they seek to ensure that those organizations who disrupt harmony would not be running furthermore, and they compared the Bajrang Dal to the PFI. Now, we are crossing over to our UP Bureau Chief, Pranshu Mishra, to get us more details on this. Pranshu, can you tell us more about the statement that's been made by the Jamiat Ulema-e-Hind president? All right, we'll try to reestablish that connection, but for right now, what we do have to tell you more about is that essentially this is a statement, a controversial statement that has come in, made by the Jamiat Ulema-e-Hind chief. This statement was made on Sunday, and essentially what he said was that if the Congress, the Grand Old Party, had banned the Bajrang Dal 70 years ago, the country would not have been ruined. Now, what we were telling you about earlier was we were giving you a bit of context about this entire Bajrang Dal Congress matter. Now, once that manifesto promise had come in, there was a lot of controversy about it when you even saw the Prime Minister make it a big theme when it came to his pre-election speeches. Now, post the controversy, there was another Congress leader, Veerappa Moily, who had essentially said that the Congress does not seek to ban the Bajrang Dal, but it has remained a big issue, especially when it comes to Karnataka. And now we're seeing the Jamiat Ulema-e-Hind president make a statement on it, essentially saying that if the Grand Old Party had banned the Bajrang Dal 70 years ago, the country would not have been ruined. We're crossing over to our UP Bureau Chief, Pranshu Mishra, to understand more on this. Pranshu, could you tell us more about the statement that's been made? Well, see, this is a statement from Arshad Madani, which I think reflects the entire sentiment of the community, the Muslim community in particular. And, they are elated and happy at the fact that the Karnataka government or the Congress party there has declared to ban Bajrang Dal when they come to power. And I think this is what the Muslim organizations actually feel. Now, the entire discourse actually boils on the fact what Arshad Madani is saying is basically reflects that sentiment that in the wake of Mahatma Gandhi's death in 1948, there was initially a ban that was imposed on RSS, and that ban was later on lifted up. And, this has been a continuous debate among many within the Muslim community as well as many liberals that whether lifting of that ban was justified, whether it was, a mistake on the part of the Congress party. So I think what Arshad Madani is now trying to suggest is that had these bans been imposed way back at the time when India got its independence, probably this sort of politics, which they feel is a politics of hate, according to Mr. Madani, would not have prevailed. So I think in a way, Mr. Madani is welcoming this decision, but he's also reminding that this decision has been taken quite late in the time. Pranshu, do stay with us right now. We're going to listen into that statement, then we'll come back to you. गांधी फैमिली आगे बढ़ी, दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फक्र तंगदस्ती का बोलबाला न होता, मुल्क के अंदर इख्तिदार उनका होता जो मुल्क में हर तबके को चैन और सुकून के साथ जिंदा रहने का मौका देते हैं। All right, we're crossing back over to our UP Bureau Chief, Pranshu Mishra, for more on this. Pranshu, I think what's going to be interesting to see now is how the Bajrang Dal responds to this statement, because earlier when we saw the Congress make a comparison between the Bajrang Dal and the PFI in its manifesto, we saw multiple protests across the country.
See, what Arshad Madani is saying holds importance because Arshad Madani is the head of the famous Islamic seminary Darul Uloom Deoband, and he's also, the senior office bearer of Jamiat Ulema-e-Hind, which is a prominent organization within the Muslim community. Now, see, 70 years back, Bajrang Dal was not there, but yes, of course, there was the Rashtriya Swayamsevak Sangh founded in late 1920s, and post the murder of Mahatma Gandhi, there was a very intense debate which has prevailed at whether the ban on RSS should prevail or it should be lifted up. So I think what Mr. Madani is saying, he's trying to echo that sentiment, remind the Congress party that the decision of not banning the RSS and its various organizations like Bajrang Dal and others, way back when the India got independence, and especially in the wake drop of Mahatma Gandhi's murder, was a mistake. The mistake which not only came dear for the Congress party by the rise of BJP and the RSS. Please stay with us for one moment. We are being joined by Mr. Vinod Bansal of the VHP. Mr. Bansal, thank you so much for speaking to CNN News 18. The breaking input that we have and what we'd like your opinion on is a statement that's been made by Jamiat Ulema-e-Hind chief Maulana Arshad Madani. He has essentially said that the Congress, if the Congress had banned the Bajrang Dal 70 years ago, the country would not have been ruined. Could you give us your reaction to this, please? You see, आपके शुद्धि दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं CNN न्यूज़ 18 के कि आखिरकार मौलाना मदनी जो है क्या रहते और क्या गए। वास्तविकता यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म ही 30 साल पहले, 30 साल भी उसकी कुल आयु नहीं है, उसको 70 साल पहले बैन की बात कर रहे हैं। मौलाना मदनी उस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, उस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आतंकवादी, दुर्दांत आतंकवादी वलीउल्लाह को सजा होने के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट से सजा होने के बाद वो कहते हैं कि भाई हम इसको लीगल फाइट करेंगे और उसको हम बचाएंगे। आतंकवादियों को पालने पोसने और उनको बचाने का काम करने वाली है जमात। अब बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन के बारे में अगर अपनी गंदी जुबान से बोलेगी तो कहीं ना कहीं सच्चाई में फिसल जाती है। ये 70 साल पहले की बात कर रहे हैं, शायद वो मौलाना मदनी भूल गए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म 30 साल पहले हुआ वो 70 साल पहले बैन की जा सकती है। दूसरी बात ये कि वो जो वास्तविकता ये थी कि वो 70 साल पहले की उस गलतियों को कांग्रेस को याद दिला रहे थे जो कि भारत विभाजन की उन्होंने की थी। भारत विभाजन के बाद में जिस तरह से देश का बंटवारा मजहबी आधार पर हुआ था, शायद ये कह रहे थे कि या तो बंटवारा होना नहीं चाहिए था, हुआ तो कम से कम वो जो जमाती जो यहाँ पर भारत में रहते हैं उनको धकेल करके सीमा पार भेज देना चाहिए था। ये सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस की, जिसका खामियाजा संपूर्ण देश आज भुगत रहा है। क्या जिहादियों को भारत को झेलना पड़ रहा है? आखिरकार ये जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, ये मौलाना मदनी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। जिस लीडर को इनकी खुद की जमात और खुद की कौम उनको नकार चुकी हो, हमने पीछे देखा अल्लाह और रोम के बारे में जिस तरह से उन्होंने बेहुदा बातें की थी मंच से, वहां मंच के लोग ही इनको छोड़ के चले गए और उनकी जमात के लोग भी सारे इनसे कन्नी काटने लगे। तो ये जो है, अब मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करके, ओछी पब्लिसिटी बटोर करके और जिहादियों को खुश करने की ये अपना रहे हैं, जो इनकी सक्सेसफुल नहीं होने वाली। आप देखिए, उन्होंने कल राम मंदिर के बारे में भी बेहुदा टिप्पणी की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कीचड़ उछालते हुए उन्होंने कहा था कि ये मामला आस्था के आधार पर फैसला हुआ, न कि कानून के आधार पर। अरे मौलाना मदनी, उस बात को हुए 3-4 साल हो गए। आखिरकार आपके अंदर हैसियत थी और कुछ था तो आप आगे जाते ना। ये इस तरह की बातें करके इस्लामिक जिहादी यूथ को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, जो भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आतंकवाद की राह पर धकेलने की कोशिश कर रहे हो, वो आप जैसे बुजुर्ग से कम शोभा नहीं देता। भारत के साथ खड़े होना सीखिए। आप भारत विरोधी बातें करके, भारतीयता, भारतीय संस्कृति पर हमला करके आप आखिरकार कितने दिन जीवित रहोगे? कितने दिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगी? आप जो जिस तरह से भारत विरोधी मानसिकता के साथ में बार बार जो भारत की राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनको चुनौती देने की कोशिश करोगे, उनके साथ पंगा लेने की कोशिश करोगे, उसका असर बुरा होगा। जैसे आपके खुद के वक्तव्य में आप खुद ही फंस गए। अरे भाई, जो ऑर्गेनाइजेशन जन्म ही नहीं उसका बैन कर दो क्या? वास्तविकता ये थी कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले बैन करना चाहिए था भारत को। और जो पूरे देश के अंदर जहर फैला रही है, ये जमीयत के जहरीले सांप हैं जो कि बार बार आतंकवाद के नाम पर देश को डस रहे हैं। जिस तरह से मेवात की बात हो या केरल की बात हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, इधर की जम्मू कश्मीर की बात हो, सारे तबलीगी जमात और जमात के जमातों ने, जमात के जो जमाई हैं, उन्होंने देश का बर्बाद कर रखा है। उन पर ये नहीं बोलेंगे। बजरंग दल क्या है, कैसे है, कम से कम उनके बारे में कुछ पढ़िए, समझिए और उसके राष्ट्रवादी छवि और उसको देश के लिए समर्पण की भावना को जानिए। ये आतंकवादियों को उकसाने की कोशिश मत करिए। ये हिंदू मुस्लिम यूथ को जो है ना भड़काने की कोशिश मत करिए। आप कम से कम अपनी
सफेदी का तो ख्याल रखते बोलने से पहले। यूथ के इस राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये जहर उगलने से पहले 2-4 बातें कम से कम कुछ अच्छी बातें कर लेते। ये जिस तरह से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रवादी संगठनों पर उंगली उठा रहे हैं, निश्चित रूप से ये जमीयत अपने कटघरे में खुद फंसती नजर आ रही है। हमें कोई नई बात नहीं लग रही इसमें।